Hello everyone. Today we are going to solve few questions related to transcription in prokaryotes and hope this will help you in your upcoming set exams and your CSIR-NET Part B questions. So let's begin. So our first question is, in prokaryotes, the promoter region of most genes contain which consensus sequence? So we are talking about the promoter of prokaryotes. So promoter of prokaryotes contain -10 and -35 regions. These are the key bacterial promoter elements recognized during transcription initiation and आपको पता होगा कि promoter region को recognize करता है sigma factor. So sigma factor bind होता है promoter region के -30 और -10 and -35 region पे. Next, the sigma factor of bacterial RNA polymerase primary function. What is the function? हमें function बताना है sigma factor का. तो sigma factor का function होता है recognition of promoter sequence. The sigma factor provides promoter recognition specificity to bacterial RNA polymerase and is especially important during initiation. Next question. Which statement regarding bacterial RNA polymerase is correct? So we know that there are 5 types of RNA polymerase. 3 types of RNA polymerase, 1, 2 and 3. So we have to choose the correct statement. So the answer will be C. Holoenzyme contain core RNA polymerase and sigma factor. So both core RNA polymerase plus sigma factor together make the holoenzyme. Next question. During transcription, RNA polymerase. So what is the role of RNA polymerase during transcription? RNA polymerase reads the template strand. It reads the template strand 3' to 5'. RNA polymerase reads the template DNA strand 3' to 5' while synthesizing. So RNA की जो polarity होती है वो कौन सी direction में होती है? 5' to 3' direction. Unlike DNA polymerase, it does not require a primer. Next question. If the DNA template is this, the RNA sequence, तो हमें simply क्या करना है? हमें base pairing करनी है. आपको पता होगा कि एडेनिन थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाएगा आरएनए की केस में. सो द आंसर विल बी सी और पोलैरिटी हो जाएगी 5' to 3' डायरेक्शन में. Which RNA polymerase in eukaryotes primarily synthesizes mRNA? तो थ्री टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, तो हमें स्पेशली बताना है कि एमआरएनए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है. तो इस केस में जो सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज है वो एमआरएनए की सिंथेसिस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमें बताना है आरएनए पॉलीमरेज 1 किसकी सिंथेसिस करता है. तो 1 सिंथेसिस करता है 5S rRNA की. Which is synthesized by RNA polymerase 3. RNA polymerase 3 synthesize करता है tRNA को. Next question. TATA box in eukaryotic promoter is recognized by. को पता होगा कि टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में. तो वो टाटा बॉक्स का रोल क्या है? तो टाटा बॉक्स रिकॉग्नाइज करता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को. टाटा बाइंडिंग प्रोटीन सबसे जिसे हम टीबीपी कहते हैं, टीबीपी जाकर टाटा बॉक्स से बाइंड होता है. Next question. TBP is a component of. So TBP is a component of transcription factor 2D. Which general transcription factor has a helicase activity? So helicase activity होती है transcription factor 2H के पास. CTD of RNA polymerase 2 is important because आपको पता होगा कि जो mRNA जो सिंथेसाइज होता है उसमें C टर्मिनल डोमेन होता है. तो हमें C टर्मिनल डोमेन की इंपॉर्टेंस बतानी है. तो C टर्मिनल डोमेन्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है? कोऑर्डिनेट ट्रांसक्रिप्शन विद RNA processing. Polymerase 2 CTD act as a platform coordinating transcription with RNA processing events such as capping, splicing and 3' processing.
Next question, which CTD phosphorylation is strongly associated with elongation? तो कौन से अमाइनो एसिड का रोल आता है CTD? जब C टर्मिनल पे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें से हम कौन से अमाइनो एसिड का फॉस्फोराइलेशन करते हैं? तो हम स्पेसिफिकली सेकेंड जो सेरीन प्रेजेंट होता है उसका फॉस्फोराइलेशन करते हैं. Which statement about eukaryotic promoters are correct? तो इसमें जो स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगी. TATA is upstream of the start site. TBP binds TATA. Promoter occurrence only within coding. So first and second will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन रिक्वायर्स. तो आपको पता होगा कि जब ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन किया जाता है तो रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट मैनर में जो है वो टर्मिनेशन होता है. तो हमें बताना है कि रो डिपेंडेंट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, रो प्रोटीन का यूज होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, रो प्रोटीन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज. रो प्रोटीन क्या होती है? एटीपी डिपेंडेंट आरएनए हेलिकेज होती है. इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कॉमनली इन्वॉल्व्स. जब रो इंडिपेंडेंट जो टर्मिनेशन होती है उसको इंट्रिंसिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन कहते हैं. और इसमें क्या होता है? इसमें जीसी रिच हेयरपिन लूप का फॉर्मेशन होता है जो कि यू रिच सीक्वेंस, जो एमआरएनए में हमारा यू रिच सीक्वेंस होता है उससे जीसी रिच सीक्वेंस की पेयरिंग होती है. Which sequence can form a stable RNA hairpin? तो अभी हमने देखा कि हमें GC rich inverted repeats की जरूरत होती है. Next question, the transcription bubble generally contain approximately how many nucleotides in the RNA DNA hybrid? So we require 8 to 10 nucleotides. Next question, which distinguishes transcription from DNA replication? ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए रेप्लिकेशन में ऐसा कौन सा मेजर डिफरेंस होता है? तो इसमें डिफरेंस होता है ट्रांसक्रिप्शन यूजेस राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, रेप्लिकेशन यूजेस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया. दोनों प्रोसेस साथ में होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द प्रोसेस. न्यूक्लियस नहीं होता हमारे बैक्टीरिया के पास. Next question, which statement about bacterial operon is correct? So the answer will be C. Each structural gene must have its own promoter. Black operon किसका एग्जाम्पल है? ब्लैक ओपेरॉन किसका एग्जाम्पल है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन का. इसे हम इंड्यूस करते हैं, ये इनिशियली ऑफ होता है, इसे हम ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज. अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो लैक ओपेरॉन क्या हो जाएगा? अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो लैक ओपेरॉन, तो जो रेप्रेसर है वो ऑपरेटर से बाइंडेड है, इसीलिए लैक ओपेरॉन ऑन नहीं है. यूकैरियोटिक इनहेंसर किसे कहते हैं? इनहेंसर का काम होता है कैन फंक्शन एट कंसिडरेबल डिस्टेंसेस फ्रॉम प्रमोटर. विच कॉम्प्लेक्स ब्रिजेस रेगुलेटरी फैक्टर्स विथ आरएनए पॉलीमरेज 2? सो द आंसर विल बी मीडिएटर कॉम्प्लेक्स. And the last question is, which event occurs co-transcriptionally in eukaryotic mRNA synthesis? Answer will be 5' capping. Co-translational process होता है. Next question, 5' cap of eukaryotic mRNA contain. So 5' capping में क्या होती है? 7-methyl guanosine with 5' triphosphate linkage. Which statement about poly A tail is correct? Added enzymatically after pre-mRNA cleavage. Assertion reason question है कि RNA polymerase 2 transcripts undergo extensive processing. Pre-mRNA commonly undergo capping, splicing and polyadenylation. So the answer will be A. Both are true, but R is not the correct explanation of A. So this was all about transcription in eukaryotes and prokaryotes. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.